According to the NSSO data of 2015, about 85% of the rural households still depend on firewood to meet their basic household energy needs for cooking and boiling water. This is a significant number in the country, especially in Birda block and the areas where we are working. They access this firewood from the forests which are adjoining to their villages, as well as the communities clearing forests to convert them into agricultural lands. So these have contributed towards the depletion of forests in this area. हम छोटा हाथे 12-13 साल के, जब शेर भी था और जंगल बहुत था, हमने काट काट के खुद के जो खेत बनाए हैं, बाड़ी बनाए हैं, घर मकान भी बनाया है. The depleting forests and the environmental degradation of this area has been one of the factors which has led to the changes in the climate of this area and the rainfall patterns. 30-40 साल पहले 25-30 फुट पर पानी मिलता था. अभी को 200 करवाओ चाहे 400 करवाओ, जब पानी को नहीं मिल गए बोर करवाओ या हैंडपम्प, जब मिले नहीं तो नहीं है. कुआं सब सूखे पड़े. यहाँ पर पानी की कमी होने की वजह से हम लोग पानी भरने जाते हैं, सो वहाँ पर बहुत लोग होते हैं, सो भीड़ लगी रहती है, सो नंबर आता है जब भर पाते हैं, और जब तक हम लोग समय हो जाता है स्कूल नहीं जा पाते हैं, सो पढ़ नहीं पाते हैं अच्छे से. To tackle these issues, one of the interventions World Vision took up was the introduction of the fuel-efficient cook stoves in the communities. मिट्टी के चूल्हे में ज़्यादा लकड़ियाँ जलती थी, तो उसमें हमें समय का बचत नहीं कर पाते थे. और जो ये चूल्हा मिला हुआ है कि समय कम लगता है और लकड़ी भी कम लगती है. Because the traditional open wood stoves emitted more amount of smoke and carbon particulates, it led to the larger issue of global warming. At the same time, has been a triggering factor for childhood pneumonia. The fuel-efficient cook stoves emit significantly less amount of smoke and consumes about 50 to 60% lesser firewood compared to the traditional stoves. जंगल कम जाने पड़ता है इसमें. पहले कम से कम 4-5 दिन न जाने, अब तो जंगल को, और अब तो एक दिन चले जाएं तो एक हफ्ते को हो जाता है. Because of the lesser requirement of firewood in these new stoves, the spin-off benefit is in the lesser time that the women need to spend in collecting firewood from the forests, and also ensuring that more trees survive in the wild. बात हम आए कछु समझाने, बात हम आए कछु समझाने, बात हमें आए. We have sensitized the communities on the importance of environmental protection and an environment-friendly lifestyle and an environment-friendly livelihood practices. We also sensitize the children and children clubs to help them understand the importance of environmental protection and conservation. In this, children were introduced to an activity book which helped them understand trees and plants in their own village, the different value that the trees bring in terms of its medicinal value, in terms of its commercial value, and also the linkage of trees with other life forms in the nature around. हमारा सपना ये है कि हमारा गांव को हम हरा भरा भी बना देंगे और पानी की कमी भी नहीं आएगी. अगर ये चूल्हा जब मिला है हमें, तो लकड़ी कम कटेगी, तो जंगल भी अच्छा रहेगा, और जंगल अच्छा रहेगा तो बरसात अच्छी होगी, जब बरसात अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो हमारा परिवार अच्छा होगा, हम अच्छे होंगे, हमारा बच्चे अच्छे होंगे. What is being done in Lalitpur is just the beginning. There are many more miles to be covered.